Hello students, welcome to Gnanmanchri Vidyapeeth online education. I Abhishek Goswami. So in the last lecture we have started our chapter number 6 and we have discussed about some interesting point from the chapter number 6. Like first of all we have discussed about the rich heritage of Indian textiles and we have solved some practice question. And in this today's lecture, we are going to start with the new topic and it is decline of Indian textiles. So let's get start the topic. So first of all, let's learn about decline of Indian textiles. Despite of popularity of Indian textiles, the textile industry of India declined under the British. The four phases of the textile industry shown below explain this decline. As we all know that the popularity of Indian textiles was very high before Britishers came in India. ब्रिटिशर्स जब भी हमारे इंडिया में आए उससे पहले हमारी इंडियन टेक्सटाइल्स की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी बट आफ्टर ब्रिटिशर्स केम इन आवर इंडिया द डिक्लाइन मीन्स आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज डिक्लाइंड सो फेज वन सिचुएशन बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश मीन्स ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए उससे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या थी सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज प्रॉस्परस मर्चेंट्स पेड द वीवर्स in advance for the cloth and weavers supplied the woven cloth to the merchants. फर्स्ट सिचुएशन देखे कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए उससे पहले सिचुएशन थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी प्रॉस्परस थी द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज प्रॉस्परस बट आफ्टर ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया द प्रॉस्पेरिटी ऑफ textile industry was declined. Like before arrival of Britishers, like generally merchants paid the weavers in advance for the cloth. मर्चेंट वीवर्स को एडवांस में पेमेंट करते थे एंड वीवर्स सप्लाइड वुवन क्लॉथ टू द मर्चेंट्स देन लेट्स मूव टू फेज टू so phase 2 is about entry of the European trading companies in India. So first point, many European traders took permission from the local rulers to trade within their territories. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यूरोपियन ट्रेडर्स ने परमिशन ली लोकल लोकल रूलर्स की कि भी हम आपकी टेरिटरीज में ट्रेड कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट द वीवर्स इन दिस टेरिटरीज कुड चूज टू सेल देयर क्लोथ टू द यूरोपियन ट्रेडर्स हु पेड देम द मोस्ट अब मर्चेंट्स का रोल कम होने लगा जनरली जो हमारे वीवर्स है ये सभी यूरोपियन ट्रेडर्स को डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को बेचने लगे means the weavers in these territories could choose to sell their cloth to the European traders who paid the most. Then third point, the European traders sold Indian textiles in the European market thus increasing their popularity. अब जनरली क्या हुआ कि यूरोपियन ट्रेडर्स ये सभी प्रोडक्ट को अपने यूरोपियन मार्केट में सेल करने लगे सो दिस इज द फेज नंबर 2 like entry of the European trading companies. Then let's move to phase number 3 after the East India Company gained control in India. So the East India Company paid weavers an advance to supply cloth and did not allow them to sell their cloth to anyone else. ईस्ट इंडिया कंपनी वीवर्स को एडवांस पेमेंट तो प्रोवाइड कर रही थी बट जनरली ये दूसरे को मीन्स दे डिड नॉट अलाउ देम टू सेल देयर क्लोथ टू एनीवन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि भाई आप हमें क्लोथ प्रोवाइड करेंगे अदर यूरोपियन कंपनीज तेरा इंडियंस को आप सेल नहीं करोगे बट जो भी क्लोथ्स आप बना रहे हो ये हमें प्रोवाइड करना है सो द कंपनी imposed heavy duties on the cloth from India. British cloth was sold at cheaper rates in India, so there was no demand for Indian fabric. मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमारे इंडिया को कंट्रोल कर रही है सो
जो भी इंडिया के क्लोथ से इस पे काफ़ी हैवी ड्यूटीज़ इम्पोज की जाती थी, एंड जो ब्रिटिश के क्लोथ से यहाँ पर हैवी ड्यूटीज़ इम्पोज नहीं हो रही थी, एंड दैट्स वाई ब्रिटिश क्लोथ वाज सोल्ड एट चीपर रेट्स इन इंडिया। इसीलिए ब्रिटिश क्लोथ्स की प्राइस काफ़ी कम होने लगी, सो देयर वाज नो डिमांड फॉर इंडियन फैब्रिक, और इसी के कारण इंडियन फैब्रिक की कोई डिमांड इंडियन मार्केट में नहीं थी। Then let's move to phase 4, cheaper British fabrics. So British machines produced cheaper cloth. People began buying these machine made cloth from Britain, then leading to the decline of Indian textiles. Means cheaper British fabrics इसी के कारण बन रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, लाइक मशीन्स से काफ़ी इजीली क्लोथ्स बनने लगे थे, एंड इट वॉज चीपर देन इंडियन क्लोथ्स। सो जनरली ब्रिटिश क्लोथ्स की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी और इंडियन टेक्सटाइल्स धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। Then let's move to practice question 6.1. Fill in the table based on the process involved in the making of cloth. So you have to directly fill the table in your supplementary book, like process, then who did it and description of the process. So first of all, spinning process. Generally women did it, and description of this process, like thread was spun using a charkha and then rolled on a takli. स्पिनिंग क्या है कि एक थ्रेड जिसका यूज़ करके मीन्स उसको हमें बनाना है फ्रॉम द चरखा, एंड उसको एक दूसरे के ऊपर रोल अप करना है, एंड जनरली इट प्रोसेस वाज डन बाय द वुमन। देन वीविंग प्रोसेस, वीविंग प्रोसेस वाज डन बाय द मैन। Like description of this process, this involved making cloth from their thread using a hand loom or peat loom. Means weaving क्लोथ बनाने की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें थ्रेड में से हमें एक क्लोथ बनाना है, और इसमें हमें यूज़ करना है हैंडलूम का। सो इट वॉज डन बाय द मैन। देन नेक्स्ट पॉइंट, डाइंग। So generally man did it, and description of this process, like this involved adding colors to the threads for making colored textiles. Dyeing means cloth के ऊपर कलर करना, उसके ऊपर कलर अप्लाई करना। सो जनरली ये थ्रेड्स के ऊपर हमें कलर अप्लाई करना है, और इससे क्या होगा, हमारा टेक्सटाइल्स भी कलर्ड हो जाएगा। Then block painting, block printing. So it done by the man, and description of the process, this involved creating prints on the cloth using wooden blocks which had designs made on them. मीन्स क्लोथ बन गया, उसके ऊपर डाई भी हो गई, बट उसके ऊपर हमें प्रिंट करना है, डिज़ाइंस को बनाना है। So this involved creating prints on the cloth using wooden blocks and which had designs made on them. Means उसके ऊपर हमें अब डिज़ाइन बनानी होगी। So these four tips you must remember. Like first of all क्या होगा, spinning होगा, then weaving process होगी, after weaving process we can see that dyeing process, and last में होगा block printing. एंड जनरली जो स्पिनिंग प्रोसेस है इसमें वुमन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, एंड इन वीविंग एंड इन अ dyeing in a printing we can see that the role of men is very high. Then let's move to practice question 6.2. So despite stiff competition from the British textiles, Indian handloom weaving did not die. What were the reasons for this? Write 3 reasons in not more than 80 words. Means stiff competition, hard competition from the British textiles. Indian handloom weaving did not die. मीन्स ब्रिटिश टेक्सटाइल्स के साथ काफ़ी एक हार्ड कंपटीशन हमारी इंडियन टेक्सटाइल्स की थी, फिर भी हमारा इंडियन हैंडलूम
वीविंग प्रोसेस है जो डाई नहीं हुआ, मीन्स उसका जो फेड है, मीन्स ये फेडेड नहीं हो पाया। इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ने लगी, इसको कोई ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। सो क्या रीज़न होंगे? So three reasons are as follows. First reason, machines could not produce clothes with intricate weaves and traditional patterns which were in the demand amongst the rich and middle classes. फर्स्ट रीज़न ये है कि मशीन्स से जो क्लोथ बनता है, यहाँ पर वीविंग अच्छे तरीके से नहीं होता एंड ट्रेडिशनल पैटर्न्स को जनरली मशीन से नहीं बनाया जाता। सो ट्रेडिशनल पैटर्न्स एंड इंट्रिकेट व्यूज की काफ़ी डिमांड होती है अमॉन्ग्स द रिच एंड मिडल क्लासेस, एंड ये डिमांड को फुलफिल मशीन वाले क्लोथ नहीं कर सकते थे। Second reason, British manufacturers did not produce the coarse cloth used by the poor in India, मीन्स जो पुअर पर्सन जो क्लोथ्स पहनते थे, ये क्लोथ्स को जनरली ब्रिटिश मैन्युफैक्चर नहीं बना रहे थे, लाइक कोर्स क्लॉथ। सो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स डिड नॉट प्रोड्यूस द कोर्स क्लॉथ यूज्ड बाय द पुअर इन इंडिया। Then next point, during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textiles and use hand spoon and hand woman cloth। मीन्स नेशनल मूवमेंट में गांधी जी ने एक मैसेज स्प्रेड किया था कि बॉयकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल्स एंड अडॉप्ट इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, अडॉप्ट हैंड स्पून एंड हैंड वुमन वुमन क्लोथ। तो ये एक स्पिरिट गांधी जी ने इंडिया में स्प्रेड की थी, और इससे भी हमारे इंडियंस क्लोथ्स की डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही थी, मीन्स कंटिन्यूसली हमारी डिमांड हो रही थी। Then let's move to concept time 8. So topic is rise and decline of the local iron and steel industry. So let's read about the impact of the arrival of the British on the local iron and steel industries. Means steel इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री का डिक्लाइनेशन देखने को मिला। तो क्या उसके रीज़न थे? So before the arrival of the British, artifacts including many abandoned metal furnaces, weapons made of wood steel suggest the existence of a thriving iron and steel industry before the arrival of the British in India. Means before the arrival of the British, that iron and steel industry was in a demand, कि हमारी लोकल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। जनरली वुड्स स्टील में से जो भी वेपन्स बन रहे थे, फर्नेसेस बन रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान मेड ऑफ वुड्स स्टील एंड abandoned metal furnaces. Then let's move to last part of this chapter. The arrival of the British adversely affected the iron and steel industry. But Britishers जैसे ही हमारे इंडिया में आए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ। So changes caused and introduced by the British and what impact on the local iron and steel industry, let's learn about them. So first of all, defeat of the Rajas and the Nawabs. So इसकी impact यह हुई, the sword and armor industry that made weapons for the Rajas and Nawabs died. Means राजा और नवाब की हार हो गई ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में। तो इससे क्या हुआ कि स्वॉर्ड एंड आर्मर इंडस्ट्री के जो मीन्स यहाँ पर जो वेपन्स बन रहे थे राजा के लिए और नवाब के लिए, तो ये भी अब कम हो जाएंगे। Then introduction of new forest laws and impact of these event in a iron and steel industry, like new forest laws prevented the people from entering the forest
which were a source of iron ore. Means forest was the source of iron ore. एंड न्यू फॉरेस्ट लॉ क्या कहता है कि भाई आपको विदाउट परमिशन फॉरेस्ट में एंट्री नहीं मिलेगी. सो इससे क्या हुआ, आयरन इंडस्ट्री को जो आयरन और मिलना चाहिए ये नहीं मिला. देन हैवी टैक्सेशन ऑन यूज ऑफ आयरन फर्नेसेस बाय द लोकल पीपल, कि लोकल पीपल आयरन फर्नेसेस को अगर यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर काफ़ी हैवी टैक्स होंगे. So high taxes on iron furnaces discouraged people from continuing iron smelting as an occupation. Means high taxes होने के कारण people generally discourage हो गए कि अब iron smelting हमारा occupation नहीं होगा, क्योंकि high taxation है तो जनरली यहाँ पर प्रॉफिट भी काफ़ी कम हो रहा है. Then impact of iron from Britain. So demand for local iron and steel decline. Means local iron and steel industry काफ़ी अच्छी थी, but आयरन इंपोर्ट हो रहा था फ्रॉम द ब्रिटेन, जिससे क्या हुआ, डिमांड फॉर लोकल आयरन एंड स्टील was declined. So this was about our today's lecture. In this lecture we have discussed about two important points like declination of Indian textile industry and declination of local iron and steel industry. So I hope you understood very well about this video lecture, and by this video lecture we have completed our chapter number 6 NCERT, and in this next video we will learn about chapter number 8. So I hope you understood very well about chapter number 6. If you have any doubts regarding chapter number 6, then you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will move to chapter number 8. So have a nice day and thank you for watching this video.